Okay, I'm going to share my screen MSSS. ठीक है? Okay, this is a database that I had already created. We will create a new database for you, how to create the tables also. So I'm just showing you how the forms, queries or reports looks like after we create it. Here I'm having a database in which I'm having these tables. On the left hand side you can see this is a tables. Tables heading के नीचे आपके पास 3 टेबल नजर आ रहे हैं. These are the various objects. Queries heading के नीचे आपको बहुत सारी queries नजर आ रही हैं. Then on the form heading के नीचे आपको एक form नजर आ रहा है and reports heading के नीचे एक report है. So when I had created this table is a department table in which I'm having the department number, department name and location of the department. Employees table is there. Employee table mein I'm having employee number, name of the employee, date of birth, salary, commission, designation, department and one photograph of the employee. Here in the data, in the table, you will not be able to see the photograph. You will only see the symbol of attachment. This is one of the data type. We will discuss the data types also. And this is the queries. Suppose department query in which the department, according to the department, employees has been displayed, or according to the designation, employees has been displayed. Now in the form will look like this. Same employees table, this was the employee table and this was the employee form. So this is a very user friendly and neat way to enter the records. In this you can see at the bottom, यहाँ नीचे देखो आपके पास navigation buttons हैं records के. Follow my pointer को follow करो. देखो नजर आ रहा है सबको? नजर आ रहा है? यहाँ पे देखो ये 1 of 12, that means 12 records are there. I can go to the next record, or I can directly go to the last record, first record. This is the first record button. I can go to next, or last is the new record, blank button, blank record. I can click here and I can enter the values here. Okay, salary, then employee name, commission, whatever values you want to enter, date of birth, designation, and department number. Department number you can choose from here. जो already departments हमारे पास हैं, सिर्फ उन्हीं में से choose करना है, आपको अलग से values नहीं देनी है. And you can go to the next. So it will save the record. You can go to the employee table. आप इसको save कर दो. अब employee table में जाओगे तो आपको वो नया record नजर आ जाएगा. See, हमने ये जो record अभी डाला है वो add हो गया यहाँ पे direct 1 2 3 first में. Okay. Now I'm going to show you how to create table from the beginning, how to create these kind of tables. Click on file, new, blank desktop database. Give a name to the database. I'm giving it a name class 8th B. Okay, click on create. By default, a new database has been created with a blank table in the datasheet view. So there are two views of the table. One is datasheet view, one is the design view. In the datasheet view, you can insert the data, you have to enter the data, and in the design view, you have to design the structure of the table. Structure of the table means I told you elements of the table, fields and records and their data. So structure of the table means how many fields are there, which fields are there, what type of data those fields will have. So that definition will be given in the design view. Yeah. Why there are so many students who are coming late again and again? It's disturbing the whole class.
Okay. Now here you are having by default one column ID which has the primary key also, in which automatically numbers will be entered. I can click here, click to add a field. I can click here, give the data type. These are the few data types. Data types means the type of data that a particular field will have, the type of values that a particular will have. So I can click here and choose, suppose I want to give roll number or admission number, I will choose the data type as number. I can type here admission number. Then I can go to the next column. This is click to add. Again, now I want to add the student name. I will choose short text. Here I will add student name. Then I can go to the next. I can add as many fields as I want. Suppose I want to have the father's name. I will click here and type father's name. You have to specify the data type which you want to add. Suppose I want to add the date of birth. I will click date and time. So it will allow you to enter only a valid date. You will not be able to enter simple numbers or any text. You have to enter only the proper date. Okay. So I can type here date of birth. Okay. Now I can go to this field. I can type the data. So suppose this is the admission number. This is the name of the student. This is the father's name. Then date of birth. You can see here, this is a calendar also. यहाँ पर आपको कुछ एक कैलेंडर की तरह भी नजर आ रहा है, जैसा आपको नॉर्मली ऑनलाइन फॉर्म्स फिल करने में नजर आता है. आप यहाँ से क्लिक करके भी डेट चूज कर सकते हो, और यू कैन टाइप द डेट योरसेल्फ. यू कैन एडिट द सेल. जैसे आप एक्सेल में एंट्री करते हो, सेम वे आपको एक्सेल में एंट्री करनी है बाय प्रेसिंग द टैब की. नाउ यू कैन सी आईडी फील्ड में मैं कोई एंट्री नहीं कर रही हूँ. आई एम जस्ट प्रेसिंग द टैब की. इट विल ऑटोमेटिकली हैव द नंबर्स 1 2 3 4. ऑटोमेटिकली इट विल हैव द नंबर्स. लाइक दिस यू विल कंटिन्यू एंटरिंग. ऑटोमेटिकली देख लो 1 2 आ रहा है, मैंने यहाँ पे एंटर नहीं किया. दिस इज द डाटा शीट व्यू. In this data sheet view, you have less control over the structure of the table. यहाँ पर आपके पास टेबल के स्ट्रक्चर पे कंट्रोल कम होता है आपको, because data sheet view is basically to enter the data, to define the data कि कितने fields होंगे, कौन-कौन से fields होंगे, कौन-कौन सी data types होंगी, fields पर किस तरह के check लग सकते हैं, किस तरह की property set की जा सकती है. All this work can be done in the design view. There are two methods to switch between the views. One is, this is view button in the fields group. Click here, you will find two options, data sheet view and design view. I can click here, it will show me the design view after saving this table. मुझे ये table अभी save भी करना है. हमने इस table अभी save नहीं किया. We had created the database but we had not saved the table. I'm giving this a name, student info. Click on OK. Now this is the data design view. This design view is divided into two parts. On the upper part, on the upper screen, you will see this is the field grid pane in which we are having the field name, their data type and their description. Description is optional. You can type the description, you can skip the description. डिस्क्रिप्शन मीन जस्ट एन एक्सप्लेनेशन अबाउट द फील्ड कि इस फील्ड में आप किस तरह की वैल्यू एंटर करनी है या क्या नहीं एंटर करना है या कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करना है. दिस डिस्क्रिप्शन इज नॉट विजिबल एनीवेयर. ये कहीं विजिबल नहीं होगी, ओनली इन द डिजाइन व्यू यू कैन सी इट. So this is optional. Here in the bottom you can see, in the lower half of the screen you will see these are the field properties. For every field, for every type of data type, you can have the different kind of properties. Like नंबर डेटा टाइप है तो उसकी अलग से प्रॉपर्टीज है. अगर आपके पास टेक्स्ट डेटा टाइप है तो उसकी अलग से प्रॉपर्टीज है. You can click in this down arrow to see all the data types here. So we will discuss these data types again theoretically also कि हर एक data type का क्या purpose है. Now for now being, you can see these are the properties in which field size is given,
caption is given, format is given, validation rules, validation text, required. Required means compulsory करना है इस field में data entry करना या नहीं, required. Many properties you can use, many properties which are not of your use. ठीक है, तो in the structure, to define the structure of the field table, we will use the design view, and for entering the data, we will use the data sheet view. Okay, now there are other methods to switch between the views. One from this view button, home tab, view button, or fields tab, view button, or you can also go to the bottom at this status bar. यहाँ नीचे देखो status bar आ रही है. In this status bar, you can see the data sheet view, you can see the design view. Two options are there. Design view, data sheet view, same table, जो table selected है. If you want to create more tables, अगर आपको new और table create करना है, तो what will be the method? एक table मैंने create कर लिया. Now I want one more table to store the result of the student, examination result. So whenever I want to create a new table, I have to click on create button, create tab. In create tab, you will find tables group. In tables group, you are finding two options are there. One is table, second is table design. Basically, there are three methods to create a table. One is table design by using the data sheet view, जैसे मैंने अभी create किया. Second method is using the design view, and third method is by using the templates. Templates we are not going to do. Tables, if I click on create a table, so it will open a new table. It will create a new table in this data sheet view. If we click on table design, it will create a new table in the design view like this. This again table 1 has been created. Field name, data type. Design view में directly open किया. इसने कोई data sheet view नहीं दिखाया, ना ही इसमें कोई ID वाला field अपने आप add हुआ. अगर हम data sheet view से बनाते, click on create table. This is a table, creating a table in data sheet view. If I click here, so it will create a table 2, new table directly in the data sheet view and with an ID column by default. Clear? So design view is more suitable because it has more control. So I can type here admission number. Okay. Don't use dot. Don't use dot in the field name. Dot या full stop का जो symbol है या commas है, do not use that. It will be invalid. Choose the data type. Then give the name of the student. Name is also a restricted field. Name is जो है वो आपका keyword है. So always use S name, student name. अगर आप directly सिर्फ name दोगे, so it will not accept it. It will give you an error because this is a keyword used in, this is the reserved words in the assess. So I will use student name. ठीक है? Short text, then I can give the marks, English marks. I want to have it in number, so I will give number. I want to have the math marks, I want to give it number. Then I will have SST, again number, like this. You can create the table. Then you can have the data sheet view. You can go to the data sheet view, save it this table. It will ask you to save it. You must save the table. Save it, give a name, result. PT1, click on OK. Now it is asking one more question. There is no primary key defined. इसमें आपने कोई primary key नहीं define करी है table में. Do you want to define any primary key or do you not want to create? अगर आपको कोई field as a primary key रखना है जिसमें आपका field common नहीं, आपका जो values हैं that they will be common, they will not be common, जहाँ पर कोई value repeat नहीं होगी. So if you want to have any that field, तो आप इसको yes कर सकते हो. अगर आपको नहीं रखना है तो you can click on no. Okay, so I'm going to click on no. Now I am entering the values. I can enter the values here. I can give the admission number, I can give the student name, I can enter the marks. Use the tab key to move to the next. Now अगर मैंने primary key नहीं रखी है तो that means I can enter the two admission numbers which will be same. ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपकी वैल्यूज रिपीट हो सकती हैं तो आप प्राइमरी की मत रखो. अगर आपको लगता है कि मुझे
values repeat नहीं करनी है तो you will put it as a primary key. You will set it as a primary key. Okay. So I'm giving another name. Then I'm entering the marks. So you can continue with this. आप इस तरह से डाटा एंट्री करते जाओ जितनी डाटा एंट्री कर सकते हो. हाँ जी, यहां तक अगर क्लियर है then I will show you the further options. हाँ जी, हरमनपाल, अकुल, जिया, तरन्या, समीक्षा, प्रभशरण, अगर लग रहा है कि यहाँ तक क्लियर है, स्टेप्स क्लियर है, क्या क्या किया हमने. हाँ, आएंगे तभी जब आप प्रैक्टिस करोगे. अभी आपने सिर्फ स्टेप्स को व्यू किया है, देखा है कि हम कहाँ कहाँ क्लिक कर सकते हैं. ठीक है, प्रैक्टिकली जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे इट विल नॉट बी क्लियर, मच क्लियर, राइट. सो ऑल ऑफ यू, आई एम गिविंग यू एन असाइनमेंट. ठीक है, जिनके पास घर पे लैपटॉप है, सिस्टम है, MSSS अवेलेबल है, रेज योर हैंड्स. किस किस के पास है, सो दैट आई कैन काउंट. किस किस के पास MSSS अवेलेबल है घर पे, जो अपनी असाइनमेंट जिनको मैं अगर दूं तो वो कर सकते हैं. ओके, अभी तक सिर्फ 5 स्टूडेंट्स के हैंड रेज हुए हैं. रेस्ट ऑफ यू, नो प्रॉब्लम. अकुल, असेस है तो सही ना, चाहे 7 वर्जन है, इट डजेंट मैटर. अनंत, गौतम, ओके गुड. और अंजनी, अभिषेक, अंश, अर्शप्रीत, यू आर नॉट हैविंग असेस. हरमन, आपके पास नहीं है. अनन्या, 13 वर्जन इज ओके बेटा. 13 में क्या प्रॉब्लम है. हाँ जी, सिमरप्रीत, गुरदीप, जिया, लविश, यू आर नॉट हैविंग MSSS. प्रभशरण, प्रणव, ऑन योर कंप्यूटर्स. कावेश. मैम MSSS ना. हाँ जी, मैम अगर नहीं है तो प्लीज मेक इट इंस्टॉल करिए, डाउनलोड करिए. ऑफिस का वर्जन डाउनलोड करो जिसमें आपके पास MSSS हो. ठीक है. हरमन, यस मैम. यू आर नॉट हैविंग MSSS. मैम यस, मैंने सर्च किया था, मेरे पास है मैम. 2007 वाला है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑफिस 2000 आपका वर्ड एक्सेल भी 2007 होगा फिर. ठीक है, अगर तो आपको 13 का वर्जन मिलता है, Excuse me, ma'am. इट्स ओके. अगर मिल जाएगा तो इट्स ओके, दैट विल बी गुड. अगर नहीं भी मिलता है तो यू कैन वर्क इन 7 ऑल्सो. ओके मैम. Excuse me, ma'am. यस अर्शप्रीत. मैम 2010 वाला है, ठीक है ना. Doesn't matter, version doesn't matter. Basic functions are all same in all the versions. जितने functions हमने Okay, यूज ma'am. करने हैं that will be same. वो सब में होंगे. ठीक है, चाहे वो 10 है, 13 है, 19 मैम नहीं है. Okay. Okay, I'm giving you an assignment. All of you will see. ठीक है, मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ स्क्रीन अगेन से. क्या गया. Okay, note down the field names. ठीक है, यहाँ पर आपको और फील्ड्स ऐड करने हैं. मैं आपको एक फील्ड्स दे रही हूँ, न्यू टेबल क्रिएट कर रही हूँ. आई एम राइटिंग द फील्ड नेम्स. Here you will have admission number. Note down the field names which you will write. Number data type. Then you will have student name with short text. Then you will have father's name. Again with short text. Then you will have address, short text. Then mode of conveyance, short text. Then date of birth as date and time. Note down these field names. 6 field names are there: admission number, father's name, student name, address, mode of conveyance, and date of birth. Note down these field names. You will create a table in MSSS with these field names and these data types, and you will enter the record of 15 students. You will enter the records of 15 students in this. Okay, and I will see the you will share your screen in the class and you will present your data जो आपने enter किया है, आपको यहाँ पे present करना है. Okay, if you want to ask anything then raise your hand, otherwise lower your hands.
you will create this table in which you will enter 15 records with these 6 fields. Create the table in design view, enter the values. You can, ठीक है, enter the values. Yes, Ishan. Enter the values of 15 students, records of 15 students, then save the table. Okay. हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? Okay, then we can also format the table. We can also format this table. जैसे मैंने आपको पहले अपना table दिखाया, that was in a formatted way, right? So I'm going to this student info. I had entered. Now data sheet view, right? We were working in this. Anji, this table was there. You can go this home tab, text formatting group. This text formatting group will allow you to format the table. Here you can give the font name, जैसे आप पहले बाकी options में use करते हो, बाकी applications में use करते हो, वैसे ही है. Choose any font name, then you can have the size. Now Excel की तरह आप इनके columns का size कम या ज़्यादा कर सकते हैं. You can drag it to increase the size of the column. जैसे आप एक्सेल में करते हो, हेडिंग के ऊपर हेडिंग के कॉलम बॉर्डर पे क्लिक करके यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज, एंड देन यू कैन हैव दिस फॉन्ट कलर, bold, italic, underline options are there. You can choose any color or you can go to more color. Okay, then you can have the fill color also at the background like this. Always have the contrast. Background color अगर light है, आपके जो रो और रोज हैं they will be alternate color. आपका alternate color आएगा, एक बार color जो आपने select किया है और एक बार आपका white. You can have the admission number, name, father's name, date of birth. If you enter any wrong date, it will give you an error like this. अभी आपका next जो आएगा वो फिर से blank आएगा. Color. Like this. Okay. हाँ जी. Yes, Arshpreet. Ma'am, please tell the meaning of mode of conveyance. Mode of conveyance बेटा आपको बस है, ऑटो है, सेल्फ है. Okay, ma'am. ठीक है, जैसे आप स्कूल में आपका मोड ऑफ कन्वेंस होता है कि आप स्कूल कैसे आ रहे हो, बाय यूजिंग बस, और बस नंबर भी हो सकता है, साथ में ऑटो हो सकता है, सेल्फ हो सकता है. ठीक है. ओके. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. ओके बेटा. हाँ जी, एनीथिंग एल्स? हाँ जी, एनीबडी, एनी क्वेरी टिल नाउ? All clear? No, ma'am. Okay. Then all of you will try to do all these things at your home. Practice करोगे तभी आएंगी. Tomorrow we will start with your next. Mind it, today is your test also, right? At 5 o'clock you will get the link for the Google form. You will perform the test. All of you will submit the test at the right time. ठीक है? Don't be so late. All of you will submit the test. Tomorrow we will discuss the test also and the further things of the data types in the chapter. Okay, that's all for today.